start with TCS some part. This Turing machine. Up till now we have seen finite state machine, push down automata, and those machines, they have some drawbacks with them. Whereas the Turing machine will try to eliminate most of the drawbacks all these machines are having, and is capable of solving almost any problem. Any type of string can be validated. Turing machine has the memory in the form of one-dimensional infinite tape. Turing machine has memory in the form of one-dimensional infinite tape, which is divided into the blocks such that block can contain only one symbol at a time. So block which contains one symbol. It has a controller which preserves the current state. And that input and the state will be passed on to the transition table, which will in turn give us the next state, the output symbol, as well as the direction in which head should move. So this read-write head is capable of moving towards left or towards right, one step at a time. And this will be the block diagram of the Turing machine. So for Turing machine, we can note that it has memory in the form of one-dimensional infinite tape. Tape divided into blocks. Which contain a symbol at a time. It cannot distinguish between input and output symbols. Head can move to left or right one block at a time. Rendo. Sequence of operations
will be read the symbol, then write the symbol, and move the head. Transition table gives us number 1 next state, number 2 output symbol, and number 3 direction of head movement. One of the difficult topics in our theoretical computer science, the machine which will not be as simple as the finite state machine, where we used to take only a single decision that given the current state and the input symbol, what is the next state. In push down automata we had 2 decisions, but they were based on the input symbol as well as the situation at the stack top, whereas back in Turing machine the decision will be based only on the current state as well as the input symbol. But there are 3 decisions. Transition table will also inform us as what is the next state, what symbol should be written at the position from where we have read the input symbol, and the direction in which the head should move, that is either to left or to right. So 3 decisions based on current state and current input symbol. One of the most powerful machines which can check or validate any type of string. So there will not be any barrier. Like we have said earlier that finite state machine has got its own limitations because of lack of memory, and it cannot solve the problems like well-formedness of parentheses, multiplication of numbers, checking the strings of the type a raised to n, b raised to n. And so we have introduced memory in the form of one-dimensional infinite stack in push down automata, and we could solve most of the problems. But there are still some problems where we have used double PDA, that is 2 stacks, problems of the type a raised to n, b raised to n, c raised to n. They cannot be solved using the push down automata, and Turing machine will be capable of solving all of them. The problems which we will begin with in Turing machines, they will be identical to those of PDA, and then we will switch over to the problems which are different than PDA problems. Turing machine is a topic which, when you start solving the problems on Turing machine, we require much more concentration than any other type of problem. Okay, this is the table which cannot be filled linearly, that is row by row or column by column. Probably it will be driven by the simulation that one has to do for checking the particular string. So it will be the paper run followed by the table, and that table will be filled in exactly in the same manner as we follow the procedure to check a particular string. The procedures are again layman's procedure, and problems can be solved very effectively, and you will find that most of the logic which we will be developing in Turing machine is even readily used in solving the programming problems as such. Turing machine itself has formed the base for the modern machines that we are using. Even the memory that you know is nothing but one-dimensional in nature, and it has resulted in the same concept as stored program as well as data. Initially we are starting with Turing machine where only the data will be stored onto the tape, input as well as output. But afterwards, when we come across something called as universal Turing machine, for which we are required to write down some short note or so, then on universal Turing machine, you will be having the transition table as well as the data
stored on the same tape. And universal name indicates that the Turing machine will be capable of solving all the problems. Normally we design a machine to solve a particular problem. Like for a raised to n, b raised to n, we can have one Turing machine. For say validation of well-formedness of parentheses, we can have another Turing machine. But when we combine all these Turing machines and store them one after the other onto the tape, that means all the transition information is stored on the tape and even data is on the tape, then you can probably select as which type of string you want to validate, and it's like a menu driven program, so that you will come to know that if you are to check a raised to n, b raised to n, then where exactly is the transition table of it is stored on the tape, and from there we can pick up the information and perform the operations one by one. Even it is possible that we can have multi-tape, multi-track, multi-head type of Turing machines. So there are variations of Turing machines. Of course, in our scope of this particular subject, theoretical computer science, we will be mainly dealing with the single tape, single head type of machine. But if we have multiple heads and multiple tapes, the power of the machine increases, and some more problems which will otherwise require lot of movement of the head can be minimized, but the head selection will be one more criteria, because right now we are taking 3 decisions. We are required to take some more decisions like selecting the head, selecting the tape, or if it is a single tape multi-track, then selecting the track. And you will have to also remember as अगर तुम्ही 6:30च्या आधी येऊ शकत नाही का? दे महेश. So we were considering that the machine can have multiple tracks, multiple heads, but one has to keep or remember the information related to the position of the head on each track in that case. And if it is the single head which is going to move on multiple tracks, then not only left right, the head can have up and down motion also, because it will be a multi-track single head machine. So head can move to the previous track or to the next track or to left or to right. So we can change, but then you will have to remember the correspondence between the current position of that particular head and when we move it down, where we will be on the next step. And so we will have to preserve the information related to the delimiters and the association of the corresponding block positions on the different tapes and heads and tracks also. But if it is multi-head, then the job is simple. But then you will have to remember, okay, if I am selecting head 2, then where is it right now? And of course, to remember all this, you have got no option but to use a state for it. Okay. So which is the input symbol, from where it is coming, what is the output symbol, where we want to write it. It might happen that in multi-track machine, you might be reading a symbol from one track and you might be storing it or its copy or some modified version of it onto some other track. And then you will have to keep the track of both the input as well as output, head positions and current state. क्योंकि गलत स्टेट पे गलत हेड का इस्तेमाल हो गया तो then it will create lots of problems. Then the machine will not work. Of course, that is definitely out of scope of theory of computer science. But if you see the question papers, nearly the weightage on Turing machine will vary from 16 to 24 marks. There could be 2 or 3 problems which could be asked, and sometimes because of the lack of knowledge on the paper setter's side, you will find that some problems which are out of scope of our syllabus are also asked in the exam. In that case, designing the machine will be out of scope. We can simply show the simulation and explain the logic, but we cannot put it in the simple transition table form. That is not possible. We just cannot do that. Okay. So these are all the things which are related to the Turing machine. There is one important statement which is appearing over here, that it cannot distinguish between
input and output symbols. If you recall, in push down automata we have said that the input symbols and stack symbols are different. Sometimes we were actually using, when we used that delta notation, then we were having A and B. We were having A and B as input symbols and X and Y as the output symbols. But when we have designed the table, at that time it was not the situation. A and B themselves were pushed, because we were driven by the activity that there was no confusion. It was not a triple that we were writing. Okay. So let us consider one problem. Design Turing machine to validate the strings of the type A raised to n, B raised to n. See the concept first of all, the simulation, the design of that particular table, as in what manner we actually do it, because it is going to be a simultaneous process of designing the logic, simulating it, reaching a particular conclusion, and then filling the table. Here we assume that as the tape is infinite in both the directions, there has to be some limitation or some delimiter which will indicate the beginning of the string and end of the string. So to design Turing machine for A raised to n, B raised to n, and I start with the string A, B, B, which is put in between the semicolons. Of course, our assumption will be always that the head is at the first position. Okay. Now I will have to match 1A corresponding to 1B. So I say that in the first state, when I read A, mark it as star and move the head to the right by one position. So 1A has been marked. Actually, you will again read A, write it back, because sequence was read a symbol, write a symbol, and then move the head. First of all, I had read A, I have written star and moved the head towards right. Now I will read A, write A, and move the head to the right by one position. Again read A, write A, move the head to the right by one position. Then read B, write B, move the head to the right, and I keep on moving to the right till I reach semicolon. The moment I read semicolon, I will write it back, and I know that there is no symbol after it. So I come towards left, on the left of that semicolon, and I know that as I have marked first A, the last symbol must be B. So I read B in that state. I know that it should be B. If it is A, it is error. If it is B, mark it by star and move the head to the left. And then keep on moving to the left till star, because we know that we have already marked 1A. So when we reach star, we know that there is no symbol before it. We move head to the right by one position. This will be beginning, that we know. We read that A, it should be A. If it is B, it is error. Write it as star and move the head to the right by one position. And then keep on moving to the right, this time only up to the star. First time we had gone up to the semicolon. Now it is up to the star, and then move the head to the left by one position. We know that we are at the last symbol. That must be B. And then we mark it by star and keep on moving to the left till we reach star. Then the head is moved to the right by one position. We are at the first symbol. That must be A. Mark it as star and keep on moving to the right till we hit star. When we hit star, move the head towards left by one position
we should get B. If we get B, mark it as star and move the head towards left by 1 position. Actually, whenever we were moving, see, this was a movement towards right. This was a movement towards left. This was again a movement towards right. This was movement towards left. This was movement towards right. And always the left movement was up to the star. We are already at the star. Okay. So we don't know whether we have taken multiple steps. Here you can see that all are converted to star. But in general you are not aware, okay, because you have moved several steps and reached star, or you are already at the star. The decision is one and the same. Whenever you read star while moving towards left, write it as star and move the head to the right by 1 position. And so you are here. When I was actually expecting, after the left movement, when I move the head to the right, I was expecting A. Whereas this time, on the right of star, instead of A, I get star. And that will lead to the conclusion that the string is valid. Accept. This will be the simulation of that particular Turing machine. And when we design the table, it will be like A, B are the input symbols. Star is actually the output symbol, but eventually sometimes I will be reading it. And even semicolon. See the decisions. In state Q0, start statement. State Q0. Q0 में A मिला तो स्टार लिख के राइट में. So on A, so Q0 में A मिला तो स्टार लिखो, move to the right and change the state Q1. What is Q1's responsibility? Keep on reading the symbol and writing it back and moving towards right till we hit semicolon. So in state Q1, if you get A, write it as A, move the head towards right and stay in Q1. So you skip all A's. When you get B, write it as B, move the head towards right, stay in same state Q1. And when you encounter semicolon, write it as semicolon, move to left and change the state. Because now we are going to think in different manner. So this was all Q1. Q1 में semicolon मिलने पर semicolon लिख के left में and our state of mind will be Q2. Obviously in Q2 if you get A, it is error. In Q2 you cannot get A. If you get B, mark it as star and move to left, go to state Q3. So Q2 में B मिलने पर star लिख के left में Q3. And Q3 will take us back all the way to the left. First of all Q3 में B मिलेगा तो B लिख के left में in Q3. After skipping all B's you will encounter A. A मिला तो A लिख के left में, keep on moving towards left. But now you will not reach semicolon. Before that you will reach star. Star मिला तो star लिख के right में and repeat. And repeat. So go back to state Q0. So Q3 में सेमीकोलन मिलने स्टार मिलने पर स्टार लिख के राइट में Q0. Q0 में A मिलने पर स्टार लिख के राइट में Q1. Q1 में A मिला तो A लिख के राइट में Q1. Q1 में B मिला तो B लिख के राइट में Q1. Q1 में B मिला तो B लिख के राइट में Q1. Q1 में स्टार मिला तो that entry is missing. But we know that it is the second pass of the same table. Q1 में B स्टार मिला तो स्टार लिख के लेफ्ट में Q2. So you are in Q2. Q2 में B मिला तो स्टार लिख के लेफ्ट में Q3. Q3 में B मिला तो B लिख के लेफ्ट में Q3 till you get star. Q3 में स्टार मिला तो स्टार लिख के राइट में Q0. Q0 में A मिला तो स्टार लिख के राइट में Q1. Q1 में B मिला तो B लिख के राइट में Q1. Q1 में स्टार मिला तो स्टार लिख के लेफ्ट में Q2. Q2 में B मिला तो स्टार लिख के लेफ्ट में Q3. Q3 में स्टार मिला तो स्टार लिख के राइट में Q0 एंड Q0 में स्टार मिला तो एक्सेप्ट. Turing machine. So what about if we have a null string as an if we have a null string as an input in this case,
तुम ऐसा इनपुट दे सकते हो? कैन यू राइट अ प्रोग्राम विच विल एक्सेप्ट null string? And so many times we had come across such a situation where we were saying that in regular expression it is a null string and null string is valid. अरे हाँ भैया वैलिड है, दो क्या कैसे तुम? पेपर पे ठीक है, हाउ विल यू इनपुट? मेरा काम आसान है, मैं सेमीकोलन पे वहां पे लिख दूंगा. I can always write accept over here to say that हाँ तुम जो कह रहे हो सही हो. What's the use? मैंने कभी ना कभी इनपुट तो देना चाहिए ना, तभी तो वो नल होगा. बट when you enter some character, that character will be considered. Even in C you don't have a concept of null string. Null string you consider it as when the very first position of the string is occupied by \0, but \0 is present. And that's why most of the times when we had written the regular expression in plain English, we have never said that and null. We said that number of A's followed by number of B's. Any number of A's followed by any number of B's. Strings not containing BA, उसमें null आता है तो आने दो. बट नल के लिए एक्सप्लिसिटली अगर आप कुछ ट्राई करोगे तो यू विल लैंड अप इन प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ तो खैर पॉसिबल था कि मैं एक्सेप्ट लिख के काम चलाऊँ, बिकॉज फर्स्ट सेमीकोलन के बाद सेकंड सेमीकोलन इज एक्सेप्ट नल स्ट्रिंग. लेकिन ये हमेशा हो सकेगा ऐसा नहीं बोल सकते. ओके, मेक अ नोट, ट्राई टू डू द सिमुलेशन ऑन योर ओन. एंड सिमुलेशन जैसे मैंने पहले किया विदाउट राइटिंग द स्टेट्स, आपको डायरेक्टली यू कैन नॉट इमेजिन एज व्हाट स्टेट्स देयर विल बी. फर्स्ट ऑफ ऑल आई डिड द जॉब ऑफ द लेमैन, लाइक इवन द in school days or very small kids also will do, whether number of A's and B's are same, you just go on marking. That's the same procedure we are doing. Only thing is we are following a sequence. If you would have asked me as why did not you mark the first B, I would appreciate that. Okay, that will lead to a different logic. But I am just sticking back to the matching that we were doing in PDA. First 3 A is going to the stack and first B matches with the last A. And here I am matching first A with last B. So that will eventually match it in the same manner. But you can always match first A with first B. That is also possible. And afterwards in A raised to n, B raised to n, C raised to n, probably we will be doing that also. Okay. Do this, and on the same lines I want you to try even A raised to 2n, B raised to n. When you will mark first A, you will move to right, you should get A. Mark again as a star, बाकी सभी सेम है. Go all the way to the right, mark last B, come back. फिर एक A मिलेगा, स्टार को मार्क कर दो, change the state. You will again get A, mark it as star, and then move to the right. Got it? So एक यहाँ पे एडिशन होगी स्टेट की. Mark first A, next state, mark one more A, and then बाकी सब टेबल सेम. So for A raised to 2n, B raised to n, I will simply add one more state Q01, and Q01 on A puts it as star and goes to Q1. Numbering में कुछ नहीं. That will be A raised to 2n, B raised to n.
some statement like this: design Turing machine for W raised to R, where W belongs to A plus B bracket closure. What is A plus B bracket closure? Any combination of A and B. And W raised to R means reverse of W. Okay, so this is as good as palindrome. A string concatenated by its reverse will always form a palindrome. Only thing is, this palindrome will be of even length. And I will go for designing the Turing machine even for odd length. Okay, and I will indicate as why it is accept. We have done PDA for that, but that was double PDA. When center C was not specified, that PDA was using two stacks, that multiple transfers one to another. Here it can be done directly. Suppose we consider a string like B A A B A A B. How will be the simulation? Mark first B. Mark the first symbol and move the head to the right by one position. And then keep on moving to the right till we get semicolon. When we get semicolon, move one position towards left. But this time I should remember as what was the first symbol that I have marked. It was B, so I should be getting B at the end. If it would have been A, then I should be getting A. So it was B. And then keep on moving towards left till star. When you get star, write it as star and move the head to the right by one position. You get A, mark it as star, and then keep on moving towards right till star. This time you are remembering that the first one that was marked was A. When you get star, you will move one position towards left, and here you must get A. If you get A, mark it as star, and then keep on moving towards left till you get star. On star, move to the right by one position. You get A. Mark it by star and move the head to the right by one position, and then keep on moving to the right till star. When you get star, move the head towards left by one. We are still keeping the track that we were marking. We had marked first A, so we should get now the symbol as A only. So mark it as star and move the head to the left and keep on moving to the left till star. When you reach star, move the head to one position towards right. You get it as B. Mark it as star and move the head to one position towards right, and keep on moving to the right till you reach star. But here I get star directly. In that case, star के left में आना होगा. And on the left of star you are getting star, accept. मैंने पर्पजली ऑड लिया क्योंकि अगर स्टार्ट में जाके स्टार मिलता था तो एक्सेप्ट, वो तो हमने देख लिया. दैट विल हैपन इन केस ऑफ इवन लेंथ. दिस इज हैपनिंग इन केस ऑफ ऑड लेंथ. I have marked one symbol and I am not getting another symbol for marking. In that case, it will be the odd length palindrome. Okay, but remember that you will have to keep the track while moving towards right, that whether you have marked the first symbol as A or first symbol as B. So it will be again A, B,
स्टार एंड सेमीकोलन। Q0 में A मिला तो स्टार लिख के राइट में Q1। So Q0's logic will be mark first symbol. What will be Q1's job? To skip all A's moving to the right, all B's moving to the right till we reach semicolon. On semicolon, move to left in Q2. So this was move to right. Right movement थी. एंड सेमीकोलन के लेफ्ट में अब मुझे ए ही मिलना चाहिए. ए मिला तो स्टार लिख के लेफ्ट में चले जाएंगे Q3 में. बी तो नहीं मिलेगा. दैट मीन्स इट इज ऑल्सो रिमेंबरिंग टू मार्क ए. This right movement remembers that we have marked the first symbol as A because we are coming to Q1 through the first symbol which has been marked as A. That means definitely when I encounter the first symbol as B, I will not be coming to Q1 क्योंकि Q1 मुझे एंड तक तो लेके जाता है लेकिन फिर Q2 मुझे A को ही मार्क करने देता है. Okay, so this is mark last A. And Q3 will take me all the way to the left, skipping all B's, moving to the left, all A's moving to the left. On star, write it as star, move to right, go back to Q0. ये तो A मार्क करने के लिए हो गया. B मिला तो फिर स्टार लिख के राइट में चले जाएंगे बट Q4 and Q4 will have same activity moving to the right. But Q4 will remember the fact that it has marked B. So we keep on moving to the right. Procedure remains the same. A मिला तो A लिख के राइट में Q4, B मिला तो B लिख के राइट में Q4, सेमीकोलन मिला तो सेमीकोलन लिख के लेफ्ट में Q5. ऑफ कोर्स हमें अभी पहले एक्सपीरियंस से पता है कि स्टार मिला तो स्टार लिख के लेफ्ट में Q2 या फिर स्टार मिला तो स्टार लिख के लेफ्ट में Q5. वो तो होगा ही. एंड इन Q5 you should not get A but you should get B. B मिला तो स्टार लिख के लेफ्ट में. मैंने राइट में जाते वक्त याद रखा था कि A मार्क करना है या B. लेफ्ट को आते वक्त तो कुछ याद ही नहीं रखना है. So instead of going for Q6 I can very well use Q3 to come back. वापस आते वक्त क्या याद रखना है. So instead of increasing a state I will take the help of Q3 to come back. So Q3 will take me to the start और फिर से पहला सिंबल मार्क करके या तो Q1 में जाएंगे या फिर Q4 में. So Q5 will mark last B. Okay, this is what is happening now. So there are three clear-cut concepts into it. Mark first, move to right to mark A, move to right to mark B, move to left. लेफ्ट में आते वक्त सेमीकोलन तक तो कभी नहीं जाएंगे. राइट नाउ व्हेन आई गो टू Q0 दोनों तरफ से मार्किंग पूरा हो चुका है लाइक आवर प्रीवियस सिमुलेशन. तो मुझे Q0 में स्टार मिलेगा. आई विल एक्सेप्ट एंड दिस एक्सेप्ट विल बी फॉर इवन लेंथ पैलिंड्रोम. ओके लेकिन अगर सेंट्रल सिंबल A है जैसे इसमें तो नहीं. ओके सेंट्रल सिंबल B है तो मैंने B को मार्क किया स्टार से Q4 में आ गया. Q4 में मुझे स्टार मिला तो स्टार लिख के लेफ्ट में चला गया मैं Q5 में और Q5 में स्टार मिला तो आई एम गोइंग टू एक्सेप्ट इट. ऑड लास्ट B नहीं मिला लेकिन स्टार मिला. एक्सेप्ट इट इज सेंटर B एंड दिस इज एक्सेप्ट सेंटर A. This will be the table. Okay, and now you can see Q0 में B मिला तो स्टार लिख के राइट में Q4. This will be all Q4. Q4 में सेमीकोलन मिला तो सेमीकोलन लिख के Q5. Q5 में B मिला तो स्टार लिख के Q3. Q3 में स्टार मिला तो स्टार लिख के राइट में Q0. Q0 में A मिला तो स्टार लिख के राइट में Q1.
Q1 में स्टार मिला तो स्टार लिख के लेफ्ट में Q2, Q2 में A मिला तो स्टार लिख के लेफ्ट में Q3, Q3 में स्टार मिला तो स्टार लिख के राइट में Q0, Q0 में A मिला तो स्टार लिख के राइट में Q1, Q1 में स्टार मिला तो स्टार लिख के लेफ्ट में Q2, Q2 में A मिला तो स्टार लिख के लेफ्ट में Q3, Q3 में स्टार मिला तो स्टार लिख के राइट में Q0, Q0 में B मिला तो स्टार लिख के राइट में Q4, Q4 में स्टार मिला तो स्टार लिख के लेफ्ट में Q5, Q5 में स्टार मिला तो एक्सेप्ट। अगर उन्होंने ये प्रॉब्लम दिया तो ये दो एक्सेप्ट नहीं आएंगे क्योंकि दोज आर ऑड लेंथ, देन इट विल बी एरर, क्योंकि WW⁻R में ऑड लेंथ पैलिंड्रोम नहीं आता। ओके, लेकिन सिर्फ पैलिंड्रोम कहा तो 3 एक्सेप्ट आएंगे, WW⁻R में ओनली 1 एक्सेप्ट। ओके, any doubt? Observe that the first 2 or 3 problems that we have solved, at the end we are left with only stars. That means it is in a way a destructive type of checking, because at the end you don't have anything with you. Okay, so let us go for the next problem. To validate the strings of the type A raised to n, B raised to n, C raised to n, and in non-destructive manner. To validate the strings of the type A raised to n, B raised to n, C raised to n, and at the end you should answer valid or invalid, and also preserve the string. Don't lose it. Obviously you will have to use different symbols. You will have to use the different symbols for marking A, B and C, say X, Y and Z. So I am now for the first time going directly for the table. If you can understand it, fine. Otherwise, try to understand. इसलिए पहले टेबल है Q0 state में. If you get first symbol as X, which you should be getting, mark it as X and move to the right, go to state Q1. पहला B नहीं मिलेगा, C भी नहीं मिलना चाहिए. That is I am quite sure of. Q1 में फर्स्ट A के बाद कुछ A's होंगे, उन सबको छोड़ के चलना है. So A मिला तो A लिख के राइट में staying in Q1. जो B मिलेगा, that first B I am going to mark it by Y and move to right, go to Q2. So पहला A मार्क किया, सभी A's छोड़ के पहला B मिला, उसे मार्क किया. अब तो A नहीं मिलेगा, अब सभी B's को छोड़ के राइट में चले जाएंगे, और जो C मिलेगा उसे Z लिख के लेफ्ट में आएंगे Q3. यहां तक समझ सकते हैं. ऑफ कोर्स Q1 में आपको C नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि आपको B ही चाहिए मार्क करने के लिए. जब आपने C मार्क किया तो उस C के लेफ्ट में कौन होगा? B. वो सभी B's छोड़ के आप लेफ्ट में चले आओगे. नाउ इट इज अ रिवर्स पार्ट. B's छोड़ने के बाद आपको एक Y मिलेगा, क्योंकि आपने एक B को मार्क करके आप गए थे, इसलिए Y मिला तो Y छोड़ के भी लेफ्ट में चले जाएंगे Q3. Y को छोड़ने के बाद आपको मिलेंगे A's, उन सभी A's को छोड़ के आप लेफ्ट में चले जाओगे इन Q3. एंड व्हेन यू हिट X यू विल मूव टू राइट, X लिख के राइट में Q0. ये मेरा एक पास हो गया. फर्स्ट A, फर्स्ट B, फर्स्ट C हैज बीन मार्क्ड एंड आई कम बैक. फिर एक बार A मिला तो उसे मार्क किया. अब जब मैं राइट में जा रहा हूं तो A's छोड़ने के बाद मुझे एक Y मिलेगा, जो पहला B मैंने मार्क किया था. मतलब अब सेकंड पास में Y मिला तो Y लिख के भी राइट में चलना होगा,
स्टेइंग इन Q1, वो y छोड़ के फिर b मिलेगा, उसे y मार्क करके हम Q2 में आ जाएंगे। फिर जितने भी b's होंगे उन्हें छोड़ेंगे, उसके बाद मुझे z मिलेगा, तो z को छोड़ के भी राइट में इन Q2, ओके। फिर c मिलेगा, उस c को z मार्क करके Q3 में आएंगे, लेकिन अब z के बाद z मार्क किया तो वापस आते वक्त भी z मिलेगा, तो उसे z लिख के लेफ्ट में Q3। मतलब रिवर्स पाथ में कभी c नहीं मिलेगा, पहले z छोड़ेंगे, फिर b's छोड़ेंगे, फिर y छोड़ेंगे, फिर a's छोड़ेंगे, x मिला तो x लिख के राइट में। My second pass is over. Now the time will come when all the a's get over. Of course, राइट में जाते वक्त मुझे अगर y छोड़ने के बाद b मिलने के बजाय z मिला तो इट इज एरर, बराबर है, क्योंकि b तो मिलना ही चाहिए। सिमिलरली Q2 में राइट में जाते वक्त z छोड़ के आगे चलता जा रहा हूं मैं, और c मिलने के बजाय सेमीकोलन मिला तो एरर, तो हो ही नहीं सकता। और लेफ्ट में आते वक्त सेमीकोलन तक आना ही नहीं है। जैसे Q0 में मुझे b और c नहीं मिल सकते, उसी तरह से Q0 में मुझे कभी x नहीं मिल सकता, लेकिन Q0 में y मिल सकता है। जब लास्ट a मार्क हो जाए तो उस a के बाद होगा y। वो y मिलने पर व्हाट शुड वी से, नॉट एक्सेप्ट, क्योंकि फिर मुझे चेक करना होगा कहीं आगे कोई एक आध b या c नहीं बचा। सो इसलिए y मिलने पर आई विल राइट इट एज y एंड मूव टू राइट एंड गो टू Q4। z तो मिल ही नहीं सकता, सेमीकोलन का सवाल ही पैदा नहीं होता। Q4 में मुझे पता है कि राइट नाउ आई एम ऑन y, उस y से आगे चलेंगे हम सभी y को छोड़ते हुए राइट में Q4। y खत्म होने पर b तो नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि दैट विल बी एक्स्ट्रा b, क्योंकि मैंने a को मार्क नहीं किया, a तो खैर है ही नहीं हमारे पास। y को छोड़ के राइट में x भी नहीं मिलेगा, z मिल सकता है, तो z को भी छोड़ के राइट में चले जाएंगे, स्टेइंग इन Q4। उसके बाद c मिला तो भी एरर, क्योंकि दैट विल बी एक्स्ट्रा c। उसके बाद सेमीकोलन मिलेगा तो इट इज वैलिड, लेकिन वी हैव लॉस्ट द स्ट्रिंग। सो नाउ इन द रिवर्स पाथ I will write z by c, y by b, x by a, come to the start and say accept. So ये सेमीकोलन मिलने पर सेमीकोलन लिख के लेफ्ट में in Q5, and in Q5 z मिला तो उसे c लिख के लेफ्ट में Q5। सभी z's को रिकवर करेंगे, सभी y को चेंज करेंगे b में लेफ्ट, सभी x को चेंज करेंगे a में लेफ्ट। ABC तो है ही नहीं, so we come to the semicolon. This time it is starting semicolon. I say accept. See that I have done the entire job of checking. I am right at the beginning of the string again, and I have answered yes or no, valid or invalid. Okay? इसका सिमुलेशन आपके समझने के लिए आपने करना चाहिए। Q0 में A मिला तो x लिख के राइट में, एंड यू विल कीप ऑन मूविंग टू द राइट टिल यू गेट b। b मिला तो y लिख के राइट में टिल यू गेट c। एंड c, this was in Q1. Okay, this was in Q2. This will be in Q3. Keep on moving to the left, 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 left till x. So this was right movement, this was right movement, this is left movement. Q3 में x मिला तो x लिख के right में, and you are at Q0. Continue करो. One of the important problems. बोलो, डाउट? टेबल हॉरिजॉन्टल फिल अप मत करो. इफ यू फिल द टेबल हॉरिजॉन्टल इट्स ऑफ नो यूज. फिल इट एज पर द लॉजिक.
पहला ए मिला, मार्क किया, फिर Q1 में आके ए छोड़ के बी तक उसे मार्क किया, लाइक दैट ये टेबल फिल होता है। क्या हुआ? After XXX, YYY, ZZZ, you are in Q0 when you get Y. वो सभी Y और Z छोड़ के आप सेमीकोलन तक चले जाओगे, और फिर उल्टा लेफ्ट में मूव करते वक्त यू विल रिकॉल रिट्रीव द ओरिजिनल स्ट्रिंग। नेक्स्ट, टू कॉपी द गिवन स्ट्रिंग। सी अभी तक वैलिडेशन के प्रॉब्लम्स थे, नाउ ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स। टिल दिस टाइम वी वेर वैलिडेटिंग इट, अब आउटपुट स्ट्रिंग जनरेट करने का काम, जैसे टू वैलिडेट, टू कॉपी इन रिवर्स, टू ऐड टू यूनरी नंबर्स, टू मल्टीप्लाई टू यूनरी नंबर्स, टू कन्वर्ट और टू गेट टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ द गिवन बाइनरी। Okay, addition of binary is very complicated unless it is of same length, and then we can go for converting the unary number to binary in the multi-track manner, etc. Out of scope of our syllabus at least. But first one, to copy. Right on. Assumption, the remaining tape is filled with spaces. क्योंकि हमें कोई सिंबल तो चाहिए डिसीजन लेने के लिए। रिमेनिंग टेप इज फिल्ड विथ स्पेसेस। सी द सिमुलेशन, ए बी ए, सपोज दिस इज द स्ट्रिंग, rest of the tape is filled with spaces like that. So I read the first symbol, mark it as X, and we'll keep on reading the symbols semicolon. Previously semicolon के left में आते थे, we never went out on the outside of that semicolon, but now we will have to till we hit space, and when we get space, अभी हम A मार्क करके आए थे तो वहाँ A लिखेंगे, फिर वापस चले आएंगे, and then I am here, and then I will keep on moving to the left till I hit X. Then I am at the beginning. Again it is A, mark it as X, and then keep on moving to the right, skipping all A's, B's, semicolon, A's till you hit space. अभी A मार्क करके आए थे तो वहाँ पे उस स्पेस पे भी आपको A लिखना होगा, एंड देन यू विल कीप ऑन मूविंग टू द लेफ्ट टिल यू हिट X, और फिर X के राइट में you are at B, and then you will have to remember or mark that particular B by Y, and then keep on moving to the right till you hit space. अब राइट में जाते वक्त आपने Y मार्क करके B को मार्क किया था, तो आगे जाके B लिखना होगा आपको। दैट मीन्स यू रिक्वायर 2 स्टेट्स टू मूव टू राइट, जैसे पैलिंड्रोम में था वैसे ही याद रख के चलना होगा कि किसे मार्क किया था। ओके, नाउ टेबल विल गो लाइक A B X Y स्पेस एंड सेमीकोलन। Q0 में अगर A मिला तो X लिख के राइट में Q1, Q1 विल रीड ऑल A's, विल स्किप इट एंड मूव टू द राइट। B मिला तो B को छोड़ के भी राइट में चला जाएगा, सेमीकोलन मिला तो सेमीकोलन को छोड़ के भी राइट में चले जाएंगे, और स्पेस मिला तो A लिख के लेफ्ट पे आएंगे Q2। राइट में जाते वक्त कभी भी X और Y नहीं मिलेगा। Q2 में सभी A's को छोड़ के लेफ्ट में
बी मिले तो बी को छोड़ के लेफ्ट में, सेमीकोलन मिलेगा बीच में, उसे छोड़ के लेफ्ट में, क्योंकि लेफ्ट मोमेंट हमेशा सेमीकोलन को पास करते हुए जाइए। एक्स मिला तो एक्स लिख के राइट में इन Q0। ऑफ कोर्स एक्स ही मिलेगा क्योंकि Q1 वाज फर्स्ट वाज ए, सो ए लेके हम राइट में चल रहे थे, इसलिए वो वही याद रखिएगा। यहाँ पे कि तो Q0 ही मिलेगा लेफ्ट में आते वक्त। अगर पहला बी मिलता है तो उसे y लिख के राइट में चले जाएंगे Q3। Q3 will skip all a's moving to the right, b is moving to the right, x या y नहीं मिल सकता, सेमीकोलन मिला तो सेमीकोलन लिख के राइट में Q3, स्पेस मिलने पर b लिख के लेफ्ट में Q4 एक्चुअली, लेकिन ज़रूरी नहीं है क्योंकि इस बार मैं वापस चलाऊंगा y तक, तो मैं इसी में ऐड कर दूं कि यहाँ पे y मिला तो y लिख के राइट में बैक टू Q0 एंड आई विल यूज दैट स्टेट टू कम बैक। दो Q यूज करूँ, दिस वॉज अ लेफ्ट मूवमेंट ना, दिस इज राइट मूवमेंट विथ फर्स्ट बी। ये चलता रहेगा कब तक? जब तक मुझे Q0 स्टेट में सेमीकोलन ना मिले, क्योंकि ये सभी अगर मार्क हो गए तो x के राइट में मुझे मिलेगा सेमीकोलन, उस पर एक्सेप्ट नहीं बोलेंगे क्योंकि अब ये जो जनरेट हुआ स्ट्रिंग है उसे क्लोज भी करना होगा, सो यू विल हैव टू राइट सेमीकोलन। ओके, सो सेमीकोलन मिलने पर सेमीकोलन लिख के राइट में इन Q4, यहाँ पे मेरा कॉपिंग का काम खत्म हो गया। नाउ आई विल क्लोज इट, दिस इज मूव राइट टू क्लोज। अब बीच में एज मिलेंगे उन्हें छोड़ के राइट में, बीज मिलेंगे उन्हें छोड़ के राइट में, एक्स या वाई नहीं मिल सकता, स्पेस पे सेमीकोलन लिख के लेफ्ट में Q5, क्योंकि एट दैट टाइम द सिचुएशन वुड बी XX YX सेमीकोलन AA ऐसा था, और आप यहाँ पे थे, यहाँ से स्पेस तक जाके वहाँ सेमीकोलन लिखा। राइट नाउ आई एम देयर, नाउ आई विल हैव टू कम बैक Q5 में, सभी एज को छोड़ के लेफ्ट में Q5, बीज को छोड़ के लेफ्ट में Q5, और x या y कुछ भी मिला नहीं, पहले तो सेमीकोलन मिलेगा, सेमीकोलन मिला तो चेंज ही करते हैं स्टेट, सेमीकोलन मिलने पर सेमीकोलन लिख के लेफ्ट में Q6। सो दिस इज कम बैक टिल एंड ऑफ फर्स्ट नंबर गिवन स्ट्रिंग, गिवन स्ट्रिंग के एंड तक आ गए हम सेमीकोलन तक। अब मुझे x या y ही मिलने वाले हैं। ओके, सो आई वोंट बी गेटिंग ए और बी क्योंकि वो सभी मार्क हो चुके थे। y मिला तो b लिख के लेफ्ट में Q6, x मिला तो a लिख के लेफ्ट में Q6, स्पेस तो नहीं मिलेगी, सेमीकोलन मिलने पर हॉल्ट नॉट एक्सेप्ट, देयर वाज नथिंग टू एक्सेप्ट, चेक नहीं कर रहे थे हम, इट वाज अ टास्क, सो द जॉब इज डन, यू हॉल्ट टू कॉपी। स्टॉप हियर। कल छुट्टी है सबको, विल कंटिन्यू डे आफ्टर टुमारो, मुझे लगा 2 अक्टूबर की छुट्टी है, सैटरडे को तो है दशहरा, डिक्लेयर होगी ना परसों तक, तो बताना। कल किधर है, नहीं बोल रहे ना ये, अरे तो फिर ना क्यों बोला आप लोगों ने? हाँ बोला तो कैन वी मीट टुमारो मॉर्निंग? शाम के तो बाकी बच्चे होंगे ना यार, इवनिंग। अरे वो रेगुलर तो चलेगा ना, वो छुट्टी है करके मैं उनको छुट्टी नहीं दे रहा, मैंने छुट्टी है क्या इसीलिए पूछा आपको कि वी कैन मीट इन द मॉर्निंग एंड कंटिन्यू विद दिस सेशन। कितने लोगों को प्रॉब्लम है? बाकी लोगों को छुट्टी है? श्योर? थोडं लवकर नाही, 8 ते 9:30 कंपायलर आहेच, 9:30 और 10 चालेल का? हो का नाही पटकन सांगा, जाऊ दे मरू दे, परवा फ्रायडे, हमें जल्दी नहीं है, मैं तो